हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स चैनल। आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 थिंग्स दैट आर मोस्ट अंडररेटेड and the most amazing benefits that are available on the credit cards in India, but people don't even recognize it, the importance of these important offers. So I'm going to cover 5 such offers across the credit card industries in India and why I love these 5 offers. So don't skip any of it. It's gonna be a short and amazing video, guys. And a very important note, if you're not subscribed to this channel, please do, and let's get started, guys. सबसे पहले आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो क्योंकि मेरे पास है 11 क्रेडिट कार्ड्स एंड आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर द लास्ट 5 years. तो आई हैव गॉट अ फेयर बिट ऑफ एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. सो द फिफ्थ थिंग ऑन माई लिस्ट विच आई लव अबाउट द क्रेडिट कार्ड इज़ द नो कॉस्ट EMI, गाइज. हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या इसके बारे में अमेजिंग है, बट जस्ट टेक अ सीट बैक एंड अंडरस्टैंड. आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज 9 months के लिए एक फ़ोन खरीदने दे रही है एंड इट इज़ आस्किंग यू द सेम प्राइस जो आप आज पे कर सकते हो. इफेक्टिवली यू आर सेविंग एन बिग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कुड पे टुडे इन 6 months, 9 months or 12 months. Isn't that just amazing? And almost every credit card in India right now has this offer going on with different e-commerce website. In my opinion, this is a very underrated thing that people don't even realize कि आज के ज़माने में कोई किसी को 100 रुपये फ्री में नहीं देता एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें 40-50,000 तक के प्रोडक्ट्स बिना कोई इंटरेस्ट के यूज़ करने दे रही है फॉर 6 to 9 months, guys. Isn't that just amazing? So you let me know in the comments what are your views on this. Coming to the fourth thing on my list, it has to be the instant cashbacks and the instant discounts that are offered across the e-commerce websites. Guys, trust me, जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है like a Samsung top notch phone or an Apple phone, HDFC is the first one to give out offers like rupees 10,000 discount, rupees 15,000 discount with top of the line phones on day one, even on pre-orders. Isn't that just an amazing benefit of having a credit card? मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यू कैन अवेल न्यूमरस नंबर ऑफ ऑफर्स एंड कैशबैक्स विच आर across all the platforms, be it Flipkart, be it Amazon, even Apple website. So ये जो एक फ्री में आपको इतना डिस्काउंट मिलता है उसकी वैल्यू कोई कर नहीं पाता. बट आप मेरी नज़र से देखेंगे तो मैंने तो बहुत पैसे बचाया. इवन इन माई वीडियो विच शोज़ कि जो मैंने लेटेस्ट S21 अल्ट्रा ख़रीदा था उसमें मुझे कितना बेनिफिट हुआ था जस्ट बिकॉज आई हैड एन HDFC credit card with me. So this has to be the number 4 on my list. Moving on, let's talk about the number 3rd on my list, which is आप आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो. लेट मी एक्सप्लेन. सो मेरे पास HDFC में कुछ 2 लाख के 2.5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स है अभी. आई कैन ईजीली यूज़ दोज रिवॉर्ड पॉइंट्स टू बुक फ्लाइट्स, होटल्स एंड वॉट नॉट. सो मेरा जो विश है, मेरी जो इच्छा है, दैट इज़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन अ बिजनेस क्लास फ्रॉम मुंबई टू USA one day यूजिंग ओनली माई रिवॉर्ड पॉइंट्स. एंड इसको जो अक्यूमुलेट कर सकते हो आप ओवर द ईयर्स एंड यू कैन परचेज ट्रैवल विद दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स. आप रिवॉर्ड पॉइंट्स से बहुत कुछ परचेज कर सकते हो, बट द एबिलिटी टू यूज़ देम फॉर ट्रैवल इज समथिंग आई रियली लव, गाइज. Now, as the list gets hotter, let's talk about the second thing that I love the most about the credit cards in India, and those are the crazy lounge benefits. The lounge access that you get at the domestic and the international terminals, they are just mind blowing. And उन सब में सबसे favorite जो मेरा है, that is the access to the American Express lounge in the Mumbai and Delhi. You have to see the video. I'm just putting it up on the I button. The lounge at the Mumbai airport that I visited with my platinum charge card, guys, like it was an experience like nothing else. एक 5-star होटल में भी जो सर्विस नहीं मिल पाती है वो सर्विस वो आपको प्रोवाइड करता है एक एयरपोर्ट लाउंज पे. टू नेम अ फ्यू, दे आर ऑफरिंग मी फ्री अल्कोहल लाइक शिवास 18 एंड ग्लेनफिडिश एट्सेट्रा जस्ट ऑन अ डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट. लाइक ये जो एक्सपीरियंस Amex आपको प्रोवाइड करता है जस्ट बिकॉज यू हैव देयर कार्ड is mind blowing. Such benefits really make me want to have more and more credit cards across different other banks. Now let's talk about the number 1 thing that I love in the Indian credit card industry right now, and that has to be the HDFC offer of
33% reward ratio on the Infinia and the DCB, the Diners Club Black Card, guys. Let me break it down for you. So I am assuming a lot of you know about the Smart Buy offer, but Smart Buy पे एक ऐसा 10 times the reward points offer है, जिसकी वजह से अगर मैं अपना DCB कार्ड एवरी मंथ 25,000 रुपीज़ के लिए यूज़ करता हूँ तो उन लोग मुझे देते हैं 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स, गाइस. मतलब दैट्स अ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ 33%. और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैं रिडीम भी कर सकता हूँ ट्रैवल के लिए, विच जस्ट सूट्स मी. मेरे लिए इस ऑफ़र को दूसरा कोई ऑफ़र इंडियन इंडस्ट्री में एज ऑफ टुडे बीट नहीं करता है. एंड दे आर रनिंग दिस ऑफर सिंस द लास्ट 2 years इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी मोर देन दैट ऑल्सो. कब तक चलेगा वो नहीं पता, बट ट्रस्ट मी, जिसको HDFC को इस ऑफ़र के थ्रू लूटना था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लूट लिया है. आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स who use the HDFC Infinia Diners Club and they have well about 3 lakh 4 lakh reward points. So that just translates to 3 lakh to 4 lakh rupees worth of travel. And ये इतने short time में acquire कर पाए हैं लोग, accumulate कर पाए हैं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. Hands down, this is the number 1 thing on my list, guys. अगर वीडियो पसंद आई हो तो give me a like and subscribe, comment in the section below, and I'll see you in another one.